Okay, so let me share my screen. So I hope my screen is visible to you all. And the same task we need to do again. That means we need to mount our drive. Okay. So here I have mounted my drive. Okay, the same code you need to perform, which you did previously. Okay. So I'm just been mounting my drive. It has been asking me the permission for driving for the drive to get mounted. Okay. It is already mounted though. Let me just do one thing. No thanks. Just again, one thing I just want to do first. That is, let me check first the runtime. Change the runtime to the GPU. Save. Then you guys have to connect. It's already connected. I am already available with the RAM and the disk. It has been already mounted. Okay, it has been already mounted. Though I am just executing the code again for you all. Just connect to the drive. Okay, and yeah, I just give the access to it. Okay, done. I given the access. Yes. Yeah, this is, now you close your, no, yeah, that was over. Now you close your Google Colab, the drive which you did worked. Okay, now close it. Now create one new file. Yeah, untitled, just anything you can put it to, like YOLO 7 custom. No worries. Okay, YOLO 7 custom. Okay, now after mounting your drive, you can change your drive. Okay, from G drive to my drive, you can connect here. I have created a folder Think AI here. This is my community name, so I just created a folder like this in my drive. So previously we created another folder name. This time I created another folder name. You can by your choice you can create any name. Okay, so the same task, and then I have came into this drive again, Think AI. Okay, and then I have cloned the YOLO 7 here. Okay, the task which you did previously, same task. It's coming fatal destination because already YOLO 7 is present in this drive. Okay, but if you will create another folder, okay, with some different name or Think AI name only, no worries, you can change the name, you can pick some another name, clone that YOLO 7 to that drive. Okay, and this is the path. This is the path I'm been following up. Okay, so this is the path I'm following. I'm in Think AI. I have cloned my YOLO 7 in this Think AI, and this is where I am exactly. Okay, and I need to change to YOLO 7, and that means I need to work in this directory. Okay, this means I need to work in this particular directory. Okay, after that, what you need to do is, again, you can go to the website, GitHub website. Okay, let me show you the website again. uh, re- Hello, am I audible? Power failure. Yeah. Yeah, think adder. What step next? See, you're in Think AI, no? Then you need to go to this directory Think AI. From Think AI, you need to clone YOLO 7, which you did previously. Similar.
Okay, then you need to check where what is the exact path. So you are already in think AI. Now you need to change your drive to YOLO 7. Okay, that means you need to go to YOLO 7. Yeah, yeah, after cloning you need to go, you need to change your drive to YOLO 7. Okay, done. All see, this is what we did in the previous project also. Same thing. Nothing new here. We did same in the previous project also. Okay, done, all done. Okay, YOLO 7. You all are in YOLO 7. Okay, now let me share my complete screen to you all. Okay, I'm sharing my complete screen and I'm again getting back to the website. Okay, I'm going back to the website of GitHub. Okay, from GitHub, this is your official website of YOLO 7. Same thing. You go and previously I worked with the YOLO 7 now. This time let's work with YOLO 7X. These weights, this model we're going to work with. Okay, so copy link address. Okay, copy link address from here. Okay, and just download the weights. Just do the same. Exclamation wget copy, means paste it here. Dot just paste it here. Okay, just see, yeah, here. Copy link address. Okay, and paste it on your exclamation wget and paste it here, and then run the command. हाँ हाँ एक्सिट डाल दो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, चलो ऐसा भी काम कर सकते हैं. ओके, यू कैन आई जस्ट कॉपी द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द कमेंट. Put it on the comment, ऐसा भी कर लो, whatever. Okay, just put it here. Fine. So just copy this and paste it here. Either you can put it just YOLO 7x. I just put x dot pt. These are the points. These are the weights actually. Okay. Now, so let me now what next you need to do. We are going to perform the custom object detection we need to perform. So how to do the custom object detection? For that purpose you should be available with the data set initially. If you're not been available with the data set, how you are going to work? So I will explain you the things. You will be preparing the data set for you, and it depends upon you what kind of data set you want to work with. Okay, whatever you want to work with, you can prepare the data set from your side. Okay, so let me I have created a data set related to the actor. I have also shared that particular content on my LinkedIn. That is actually I collected the data set of two people. That is one as what's the name of that Bahubali actor? Prabhas. Okay, and the actress name Anushka. Okay, yeah, Anushka Reddy. So you know what happened is, let me show you what I did. The same task you need to do. Okay, so I have created a folder. I've created a folder. You do with only one person. Okay, one person, not two person, just only one person. It depends upon you, whoever you select. Okay, so I've collected of images of. I created a folder Prabhas. I hope it is visible to all. Is it visible to all? Okay, so I have collected the images of Prabhas from the Google. Okay, there are certain 100 or something like that images I have been available with. Okay, I collected all those images. After that, what you need to do, just listen very carefully. Just uh, just go to Windows PowerShell. Okay, go to Windows PowerShell. Cd dot Windows PowerShell. Okay,
I'm just going here. Cd dot dot. Okay. Cd dot dot. Cd Python. Actually, I need to install one library which has been required to annotate the images. Okay. Once you collect images in a folder, that means, oh, 50 around 100 images in the folder, you do one thing: you need to label those images, you need to annotate those images. Understand what I'm trying to say? Annotation. You need to annotate those images. For annotation of those images, you require something, some additional package, some additional software to perform the task. Okay, some to perform the task. And for that, you need to install a library that is called as pipe install label, 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 img. Okay, this library you need to install in your system. Okay, this library you need to install in your system, label capital img. This you need to install in your system. I have already installed this library in my system, therefore I will be not installing this again. You need to install this library in your system. It is mandatory. Are you getting my point or not? All who are present here, all, just let me know. One folder, you need to collect the images of any person, actor, actress, or whoever. You collect your images also. If you are available with your image, and if you are available with your videos or whatsoever, you collect your images, whatsoever, just collect the images. Okay, in one folder, then install this library, label img. Okay, I'm already available with this, so I'm just writing label nimg and press enter. Okay, so here it is. This is this like an application will be opened. Is this application visible to you? Is this application visible to all? Okay, here in this application, you need to you need to go to the open the library which I have installed. I have given that name only, label img, to open this. Huh? Hai. There is a shortcut. There is a shortcut. There is one library available in the Google, which can help you to download all the images. Uh, it should help you to download all the images. Okay, but the reason is it will give you the images which are other corrupted images or fault images, that will give you. Okay, so you need to sort all those images one by one. It will give you the images, but yes, there is a shortcut, there's a library available. Okay, and let me show you the library also. Just hold on a second. uh, Let me show you one library I did worked. mm, okay, just wait, because I've been, yeah, here it is. There is a library that is called a simple image download. Is it visible to you all? Now please check it out. Simple image download. So you need to install this library first. Okay, you need to install this library. Pipe install simple image download. Simple or either image download. This library you need to install, and either you can search on Google also, simple image download, to install this particular library. You will get it on Google. It is available. Just try to find out simple image download, pipe install simple image download. It will be available on Google. It will let you know. Okay, is that okay all? The question he asked to me, sir, is there any chance to download? Okay, is there any chance to download the images?
So yes, there is a chance to download the images. You need to install this library, and then you need to use this code. You need to use this code. From simple image download, import simple image download as SIMP. Here you can call, you can create an object and call this thing, and you can use. I have downloaded Prabhas and Anushka Shetty images. Okay, and KW 100 means I have downloaded 100 images of both of them. Okay, so you can use this technique to download, though it will give you correct images also. It will give you images with the fault results also. So you need to sort it down. Okay, you need to perform the sorting of the images. So as per the question came, yeah. You're getting error while installing the library. Okay, so well, no worries. Don't. This is the question asked to me. That is why I told separately. Okay, it's better you just download the image. It will take hardly half an hour or something like that to download 50 plus images. See, I'm explaining you. I haven't explained the label yet. Wait. Okay, so yeah, this is just only 4 lines of code. That's it. I will mail it. No, is that be okay? I will mail the code, or you want right? No, okay, copy. Okay, chat box. Let me just wait. This thing and this thing, and instead of my Prabhas and Anushka, you can write any other people names, but execute them in separate cells. Okay, as I execute them in separate cells. Okay, and 100 means the 100 number of images I am going to download. You can also put any figures, 200, 300, whatsoever. Okay, whatever you want to put, you can put. Okay, you can try from your side. Either you can pick any of the celebrity name or whatsoever. It will download the images accordingly. Okay, let me. So I was explaining you about the most important thing. Once you get done with the image, very important one folder you have created of the image. Now after that, you very important thing which you need to do. Open and get to the images. Okay, for example, Anushka. For example, I took this Anushka. What you need to do, understand very carefully, understand very carefully. uh, Here there is create rectangular box present, and above create rectangular there is Pascal VOC present. Is it visible to all? Is it visible or not? Create rectangular on left hand side, create rectangular and Pascal VOC. Is it visible? Okay, click on it. Now it has been converted into YOLO format. Now check, it has been YOLO. Check it out. Check here, YOLO. Is it visible? Okay, it's your image label is not been downloaded. You're downloading the images. See, right now you not have to do the you can do it later case also. You guys can do later case. I will give you the concept what you need to do. You can apply, because here this task you need to apply on 100 images, not on one image. So this now you please do a halt, understand what I'm doing. You can do it on a later cases, because if you have downloaded 100 images, you need to label all 100 images. Yes, any question, sir? How to open this dialog box after downloading? Dialog box after downloading. Okay, let's see. एक फोल्डर बना दो, क्रिएट वन फोल्डर एंड एक्सट्रैक्ट ऑल ऑफ देम इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर. ठीक है, चाहे कॉपी कर लो. हाँ कोई भी फोल्डर बना दो, नो इशू.
Okay, so I have converted it into YOLO format, and then the next thing is I need to click on create rectangular box. Here it is, create rectangular box, and I do create a rectangle over her. Okay, over her face. After creating rectangle, here there's a pop-up window open, and it will ask you to label. Label. So I'll just write it Anushka. I write it here Anushka. Anushka. I write it like Anushka, and where to save this, where ultimately to save this. So change save directory. Here it is, one more thing present here. Change save directory. So before, let me cancel this. First, change save directory. Go to change save directory, create one directory from your side. In C drive, for example, I create a directory, this new folder. Let me create a demo. For example, I creating a demo label, demo underscore label. I just create a directory here, demo underscore label. Okay, so select the folder, demo underscore label, select the folder. Okay, and tag, and again go to the rectangular box, create a rectangular box over her face. Okay, and name it as Anushka, Anushka, Anushka. Okay, and press OK. Press OK. Done. One txt file, one text file has been created that comprises of the annotation of this image. Annotation of this image. One txt file annotation of this image has been present in that particular folder. Okay, you can check that particular folder. There will be one txt file. That txt file consists of some numerics, some coordinates that is being present in a form of an annotation in that particular folder. Now do one thing. This annotation over. Now next. Yes, change is saved. Yes, I have annotated this file. Okay, and I have saved it into that particular folder which I created separately. Okay, and now go to the next. There is no image available. Now let me open and pick another image. I explain you again what process I performed. Okay, let me pick another image. Okay, for example, this image I pick. Okay, then after picking this image, create rectangular box. So just create a rectangular box over her face. Okay, create rectangular box. Already the label I have given Anushka. Just may save it. Just press it. Okay, okay. So it has been saved into that folder which you have created, demo underscore label. It has been, this annotation file will be saved in that particular folder. So this is how you need to pick all 100 images, annotate one by one, and save into another folder label. Okay, so let me show you the label folder also. Demo underscore label folder, where it has been present. Demo underscore label. Yeah, here it is, demo underscore label. You can see, you can see Anushka Shetty. This is a labeled file, one labeled file. Okay, this is the label. We perform the label, and the label of, we perform the label of one image. Now save. Now just save this one also, and again go back to this particular folder. You can see one more, Anushka Shetty underscore 10. You can see this particular file. This is the annotation file, text file, annotated file. So you need to pick each and every image, annotate each and every image with the faces. Okay, perform the annotation, and annotation should be saved in another folder. Okay, so all these you need to do. If you have downloaded 100 images, tag all 100 images with this editor. Okay, tag all 100 images, all the faces with this editor. Save all the annotations. So now you are available with the two folders. One is the image folder, one is the corresponding label folder. Two folders you are available with. Okay, images and the annotation. So let me get back to you again. I did work with Prabhas. Okay, so let me show you. These are the Prabhas images. These all are the Prabhas images, and I opened each and every image. I create a notation of his faces. Okay, and all I have saved in my another folder, that is Prabhas labels. These are all the labels. Okay, all text files. You can see all are the text files. Okay, all these are the text files.
Done. Once you done this, please listen to me, do your task later on. Once you have performed this task, your images are ready, your labels are ready. Now you do one thing: create two separate folders. Create two separate folders. One is the training folder, one is the validation folder. Create two separate folders: training and validation. Here it is: training and validation. Two separate folders. Click on validation folder. In validation folder, create two more folders: image and the labels. Create two more folders: image and the labels. And here also in training also. In training again, create two folders: images and the labels. So you need to create two folders: first training and the validation. In validation again, create labels and the images. In training also, create two folders: labels and the images. Okay, labels and the images, create two folders. Now in validation folder, in images, do one thing: if you have downloaded 100 images for example, and if you have tagged 100 images, do one thing: pick 20 images. Pick any 20 images from your initial images, saved it here. उसको सेव कर दो यहाँ पे, save it here, and pick corresponding labels of these 20 images and save it here. अलग अलग नहीं करना भाई. Whatever the images you selected from your initial images, those out of them, select 20 images, paste it here, and corresponding labels only you need to paste it here. No, don't perform different things. Okay, same image and same labels should have to be here. Okay, just this task you need to do. That means, for example, you have collected 100 images, you have created 100 annotations. Okay, so just pick 20 images from your initial images, saved it here into validation images, compatible labels, save it here into label folder. Okay, after that after that after that in training in training in training, copy all the images, all 100 images. Okay, in images folder, and copy all the labels in labels folder. That's it, task done, nothing else. You got my point or not? If you have any doubt, please let me know. Come on, hurry up. You got my point or not? No, both in training and validation, both. You need to create validation. Training, see, in training you need to keep images in the labels. In validation also you need to create images and the labels, both. No, nothing. See, every time we do the in every machine learning project, we distribute the data set, na, training and validation. So 80%, yeah, 30/70, it depends upon you. 90/10 depends upon you. Here what I did is, yeah, ask the question. Yeah, it's like a test because we don't have any testing folder here. We don't have any test. Yeah, 20. Some of them, yes, some of them. And corresponding labels also you need to put it here. Okay, ऐसा मत करना कि वो इमेज अलग है और उनके लेबल अलग हैं वो यहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, वॉट एवर द इमेजेस. या कोई फर्क नहीं पड़ता सोमेश, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 90/10 ले ले, 80/20 ले ले. ट्रेनिंग में 100 है, कोई दिक्कत नहीं है सोमेश, नथिंग. यस आस्क. डाउनलोड, हाँ बस उसका इतना था, उसका खेल खत्म. हाँ उसका खेल खत्म, उसका इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है. हाँ देर. हाँ. हाँ यस, यू हैव टू यूज दैट ओनली हियर, बाकी उसका कोई रोल नहीं है. और वो तो मैंने आपको बता दिया बिकॉज यू आस्क्ड मी. नहीं तो मैं आप तो ये दैट आई वाज टेलिंग यू ऑल गाइस दैट डाउनलोड द इमेजेस फ्रॉम गूगल एज पर योर चॉइसेस.
Don't use of library something, वो तो you asked me the question, that is why I gave you shortcut. हाँ, yes उमेश. ओपन के लिए सिर्फ इमेज इमेज आई एम लेबल IMG लिखना है बस, मैं बता रहा हूँ आपको. ओके, ये रहा, हियर इट इज, इमेज लेबल IMG, बस इतना ही लिखना है आपको और कुछ नहीं करना. उसको इंस्टॉल कर लिया, लेबल IMG को. इंस्टॉलेशन के बाद आपको सिर्फ लेबल IMG लिखना है, वो एप्लीकेशन खुल जाएगी. उसके बाद आपको पाइथन वाले फोल्डर, नहीं नहीं, वो तो आपके ऊपर है, आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं उसे. क्योंकि मैं तो उसको ड्राइव पर अपलोड करूंगा, कोई ज़रूरी नहीं है. आई विल अपलोड दैट थिंग ऑन सम ड्राइव, ऑन ऑन माई गूगल ड्राइव, तो उसको तुम कहीं भी करो, उससे कोई इशू नहीं है. देखो वो तो ऐसा है कि मैं अपनी जुपिटर, सी रीज़न है, मैंने उसको वहाँ पर क्यों करा, मैं अपना पाइथन, मैं अपना जुपिटर नोटबुक है ना, आई एम एक्सेसिंग दैट फ्रॉम माई पाइथन फोल्डर. पाइथन डबल एन, वो तो मैंने बनाई है यार, मेरा खुद का सिस्टम है. ठीक है, तो मैं उसको वहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने वो लेबल IMG को भी वहीं इंस्टॉल करा था. ये जनरल बात है. ठीक है, ये आपको पता है, होगी आई गेस, पता है. ठीक है, क्योंकि मैं उसको जहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ वहीं पे ही सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल मारता हूँ. ठीक है. हाँ, एनोटेशन करना है भाई, सारी इमेजेस को अनोटेट करना है. और अनोटेट इससे करना है, लेबल इमेज से. ठीक है, और तो दो फोल्डर बनेंगे, एक इमेज का बनेगा, एक अनोटेशन का, मतलब एक एक इमेज फोल्डर बनेगा और एक लेबल फोल्डर बनेगा, दो फोल्डर बनेंगे इनिशियली. और बाद में, और इनको करने के बाद, ये पूरा काम करने के बाद, फिर आपको अलग से दो फोल्डर बनाने, ट्रेनिंग और वैलिडेशन, ये अलग से बनाने. समझे बात को. और ट्रेनिंग में हाँ, ट्रेनिंग में और दो बनाने, इमेज और लेबल. और वैलिडेशन में भी और दो बनाने, इमेज और लेबल. ठीक है, अच्छी बात है, पूछ रहे हो तो आपको रिवाइंड हो रहा है. ठीक है, दो बना. हाँ, ट्रेनिंग में सारे के सारे, और वैलिडेशन में सिर्फ, हाँ, देखो 100 लिए थे तो 20 कर लो, 200 ले रहे हो तो आपकी इच्छा 30-40 कर दो. ठीक है, ये काम करना है. ओके, तो ये आई गेस ये चीज़ें समझ में आई हैं आपको, ये अभी आपने डेटा को स्प्लिटिंग कर दिया आपने लेवल पर. ओके, नाउ अब आगे करना क्या है. देखिए, आई एम टीचिंग यू ऑल, देयर इज अ पावर फेलियर एट माय प्लेस. ओके, अंधेरे में पढ़ा रहा हूँ भाई आपको. ओके, ओके पूजा, यू यू आर द स्टूडेंट, मतलब पास बहुत पहले से जुड़े हैं आप पूजा, एंड यू नो कितना एफर्ट्स. ठीक है, जो मुझसे ओके, आप तो फॉर, okay, so I'm doing for all you people, and she is my former student. She did internship under me, and she knows most of the concepts of machine learning. She's good in ML and AI. She do a lot of hard work. तो उनका काम मुझे काफ़ी पसंद है पूजा का. ओके, एंड मतलब ये अच्छी बात है कि आई एम जस्ट ट्रेनिंग सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो आप, हेलो. नो 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 नो, आई विल फिनिश इट. मुझे कोई फर्क नहीं, आई जस्ट फिनिश इट. ओके, ये कर दिया उसके बाद, क्योंकि अब आगे बस मुझे आपको समझाना है, क्योंकि आप 100 इमेजेस को अनोटेट करके, एंड वो दैट विल बी वो टफ होगा, आप समझ ही लीजिए इसको. आफ्टर अनोटेशन व्हाट यू नीड टू डू, लेट मी गेट बैक टू माय दिस थिंग, drive. Okay, let me go to the my drive. Okay, let me go my drive. Okay, and go to my think AI folder, YOLO 7, where I have installed the YOLO 7. In YOLO 7, you need to do, because we are performing the custom object detection, custom object detection we are going to perform. So अब क्या करना है आपको, ये योलो 7 के अंदर आप अपलोड कर दीजिए पहली बात तो. व्हाट यू आर गोइंग टू अपलोड, यू कैन अपलोड योर बोथ द फोल्डर्स इन डेटा. ये डेटा जो फोल्डर है, इसके अंदर देर इज वन फोल्डर दैट इज डेटा फोल्डर. ओके, सो व्हेन यू कम टू योर योलो 7 फोल्डर, upload both training and validation in your data folder. Here you upload it here. You can see this training is also here. Okay, and my validation folder is also here. So
योलो 7 के अंदर अपलोड नहीं करना है. यू नीड टू अपलोड दीज टू फोल्डर्स. इफ यू आर लिसनिंग टू मी प्रॉपर, यू कैन राइट ऑन समवेयर. ओके, दो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, बट स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, डेट योलोफ के अंदर जो डेटा फोल्डर है ना, डेटा दिस फोल्डर, अपलोड ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन बोथ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर्स विच यू क्रिएटेड, अपलोड इट हियर. ओके, यहाँ पर अपलोड करना है. देन व्हाट यू नीड टू डू, ओके, after that, what you need to do is you come to the cfg folder, and cfg come to the training training folder. Okay, in cfg you come to the training folder, and okay, ये तो open कर रहे हैं, but still um, training deploy. Okay, okay, YOLO 7, go to the models. Wait, let me check some more things. Let me check. Oh, tools. Okay, let me go through all these things, then I will let you explain. Okay, deploy. Just wait. Just wait. I am searching for a file which has been required to perform some task. Just hold on a second. See, here let me first explain you what I did initially. In YOLO 7, in configuration folder, you go with the training, you go inside with the training. Okay, in training, in training, I have here the weights which I did installed is YOLO 7x PT. Okay, YOLO 7x. This is what I have installed. Okay, I've told you that I have installed this thing. So, here in this particular, there is 7x, there is 7. Here it is. YOLO 7x YAML. YOLO 7x YAML. This is already present here. You need to create copy of it. Okay, you need to make a copy. You need to create a copy of it. Okay, and rename. I have already created a copy of it, and I have renamed it by YOLO 7x dash custom YAML. Okay, I have renamed it, and this is my file. Okay, this is my file. Let me show you with the text editor. I already created this. Okay, and this is my file. This is my file. Here, one change you need to do. I am only going to detect Prabhas. Okay, because this is the data set which I have created. So you need to do one change here. Just make NC equal to 1 number of classes. Only one detection, one object detection you need to do in the images. That is, I'm going to detect Prabhas only out of in images. So I have done this thing, NC equal to 1, NC equal to 1, and just save it. Save to drive. Just save to drive. Only one object detection we are going to perform. So save to drive. That's it. Nothing else you need to do. Save to drive. That's it. Okay. This task you need to perform, and just wait. One more thing I need to do. Okay. One more thing I need to perform. To check out one more file. Guess it should have to be present somewhere. Okay, fine. Got it. Got it. One more file you need to change. That is your Coco YML file. Coco YML file. Again, create a copy. Make a copy of it. Okay, I have already created a copy. I have named it by custom underscore YML, and let me show you what changes you need to do. First of all, let me first you show you this Coco YML file. First, let me show you this file, Coco YML. First, let me show you this file.
This file was present in your previous project also, and this Coco YML file works with 80 number of classes, 80 classes. Okay, 80 number of classes it works upon, and here are the all classes present: person, bicycle, car, motorcycle, aeroplane, bus, train, truck, boat, etc., etc. All the classes are present here. So your initial Coco dataset, 2017 dataset, this works with 80 number of classes. However, we want to work with only one class, one object detection, and that is to our custom data detection. So we are not going to work upon these 80 classes. We don't want to work with. So I'm canceling this. Okay. I will create a copy of this, make a copy. I have already created a copy, and this is the name of my file is custom underscore data dot yaml. I have created custom underscore data yaml file. Here it is, custom underscore data yaml file. This is my file. Okay, so let it get open. Only very simple code. Only very simple code. Train, give the path where your training folder is present. Val, give the validation path where validation is present. Number of classes, make it as 1. And the names is Prabhas. I'm just going to trace only Prabhas. That's it. This makes a sense or not? Are you listening to me? Are you guys listening to me? Am I audible? Okay. So just create a copy of Coco YML file, name it as custom underscore data, and only one detection you need to perform. For example, Prabhas, you're going to detect on the images. Okay. So just create a one class NC1, names Prabhas, training and the validation. That's it. Training and the validation, this is the path I have given for the training and the validation initially. Okay, and the next I have given the class only one, and the name of the class is Prabhas. That's what I go. You can choose any single object detection else. Okay, one note I want to give you. Okay, I tried to perform multiple object detection. Okay, I tried to perform multiple object detection. I took two classes, Anushka and Prabhas. Unfortunately, at present, I haven't got the results for these two. This task is been working fine with one object detection, one class, one object detection for one class. I did with two. NC equal to 2 I did. I gave the name Prabhas, comma Anushka Shetty also. I did labeled both of them. I created folder both of them. मतलब मैं ऑलरेडी बहुत हार्ड वर्क कर चुका हूँ उसके पीछे, दोनों के लिए करा था मैंने, लेकिन वो मुझे रिजल्ट नहीं दिया इसने. हाँ, एक क्लास के लिए इसने मुझे दे दिया था रिजल्ट. तो मैं आपको वही कस्टम डेटा सेट में एक क्लास एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे काम होगा. ओके, इसको आप सेव कर दीजिएगा. सेव दिस, सेव दिस थिंग. बहुत ही छोटा सा कोड है, इसमें कुछ भी नहीं करना. जस्ट सेव दिस थिंग. ओके, डन 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 विद ऑल द चेंजेस. ये काम आपका पूरा खत्म हो गया, बस कुछ नहीं करना. ओके, जस्ट सेव दिस एंड नथिंग टू डू हेड. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव परफॉर्म्ड. अब सीधा सीधा आपको क्या करना है, जस्ट कोड पे आ जाइए. जस्ट गेट बैक टू द कोड. नाउ यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिस वेट्स. You already installed these weights. Okay, now the next thing is आप को ट्रेन करना है अपने मॉडल को. डिटेक्शन नहीं लगाना. प्रीवियसली आपने क्या करा था? Previously what you did, you directly perform the detection, you use detection.py file. लेकिन अभी अपन को डिटेक्शन नहीं लगाना क्योंकि मैं कस्टम डेटा पे काम कर रहा हूँ. ठीक है, दैट मीन्स मैंने अपना डेटा सेट बनाया है. आई हैव क्रिएटेड माय डेटा सेट. आई एम ट्रेनिंग. तो मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा भाई, उसको समझाने के लिए कि ये प्रभास है. दिस इज प्रभास. आई नीड टू ट्रेन माय मॉडल. ओके, फॉर दैट यू नीड टू राइट दिस कंप्लीट लाइन. मैं आपको दे रहा हूँ. ओके, कंप्लीट लाइन. Copy selection and putting this on your comments portion. Putting this onto comment. Okay, this thing. I'm putting it on a comment. ये पूरा की पूरा आपको यू नीड टू राइट सेम थिंग. कुछ उसमें चेंजेस नहीं करना. नो चेंजेस यू रिक्वायर. ओके, यू नीड टू ट्रेन योर मॉडल. ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, ये आप देखेंगे पूरा काफ़ी ट्रेनिंग इसने लगाया है. इट विल टेक सम टाइम, मोर देन हाफ एन आवर फॉर द ट्रेनिंग. मतलब मुझे 100 इमेजेस पर 100 मतलब जो है इट विल टेक नियरली अबाउट हाफ एन आवर. और 100 ईपोज लिए मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ. आई टुक 100 ईपोज. दैट मीन्स 100 टाइम्स 100 राउंड जो है वो आपकी ट्रेनिंग होगी. बैच साइज 16 बैच के बैच में मैंने आपके इमेजेस को यहाँ पर दिया है. जो साइज है इमेजेस का 640 है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड. ये डेटा, ये उसका पाथ है.
the path where my custom data file has been present. Okay, these are the hyperparameters. Okay, there are some files which are present in my YOLO 7. Okay, here this is my custom YOLO 7x weights. ओके मैंने दो चेंज करे हैं फाइल में, आपको पता होना चाहिए. टू चेंजेस आई डिड. एक तो मैंने डेटा के अंदर जाकर कोको को चेंज करा, और एक मैंने ट्रेनिंग में जाकर वहां पर मैंने 7x की फाइल में नंबर ऑफ क्लासेस को 1 करा था. ध्यान दीजिएगा, मैंने ये काम करे हैं, दो चेंजेस करे हैं फाइल में. प्रीवियस वाले में भी चेंज करे थे, वो ज्यादा चेंजेस थे, यहाँ कम चेंज. ओके, और फिर कुछ नहीं, वेट्स हैं. वेट्स आई टुक 7x, क्योंकि 7x मॉडल को यूज कर रहे हैं. नेम जो है योलो 7 कस्टम, 7x कस्टम, दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग. ओके, ये पूरी की पूरी मैंने आपको कमांड, आई हैव पेस्टेड इट इन योर थिंग. मैं आपको कोड भी सेंड कर चुका हूँ ऑलरेडी, आपको पूरा मिल जाएगा वहां पर. ट्रेनिंग में कम से कम मुझे लग रहा है हाफ एन आवर आई गॉट दिस थिंग. आधे से ज़्यादा भी लग सकता है, मोर देन हाफ एन आवर ऑल्सो लग सकता है पूरे मॉडल को ट्रेन होने के लिए. ट्रेन करने के बाद आफ्टर द ट्रेनिंग, बस अब आप डिटेक्ट चला सकते हो. आफ्टर योर मॉडल गॉट ट्रेन, तो पहले तो डिटेक्ट हम चला रहे थे प्रीवियस केस में, क्योंकि वहां अपन प्री ट्रेन मॉडल का यूज कर रहे थे, वहां पर कस्टम डेटा सेट नहीं बनाया था. यहाँ पर मैंने कस्टम बनाया है. ओके, तो कस्टम के लिए पहले मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, वो ट्रेन हो जाएगा, फिर आप ये ट्रेन डिटेक्ट चलाओगे. देन यू विल यूज दिस डिटेक्शन. अब डिटेक्शन में आपको क्या करना है, कोई भी इमेज दे दो भैया प्रभास की, ठीक है, और चेकआउट करो कॉपी सिलेक्शन, और जस्ट कोई भी इमेज आप दे दीजिए. मैं उसको कमेंट पे डाल रहा हूँ, एंड पुटिंग इट ऑन द कमेंट. लेट हिम पुट इट ऑन द कमेंट हियर. Okay, just putting it on the comment for the detection. Okay, so ये जो है आप यू कैन रन. ओके, डिटेक्शन वो आपको डिटेक्ट करके रिजल्ट्स जो है वो EXP2 के अंदर उसमें जो सेव करें. मैं आपको बता दूं EXP2 में क्या है. YOLO 7 EXP2 ये कहाँ मिलेगा आपको, रन्स में. रन्स में, डिटेक्ट में, EXP2 में, ये रहा इमेज. ओके, हियर इट इज. देखिए उसने उसको बाउंडिंग बॉक्स बना दिया, प्रभास 0.94, ये उसने उसको उसका कॉन्फिडेंस लेवल दे दिया उसने, उसका प्रिसीशन. ठीक है, कि उसने उसको डिटेक्ट करके, इस इमेज को डिटेक्ट करके उसको बाउंडिंग बॉक्स, इट हैज क्रिएटेड द बाउंडिंग बॉक्स ओवर इट, एंड इट हैज बीन शोन यू द डिटेक्शन ऑफ द इमेज. ओके, सो यहाँ पर ये टास्क परफॉर्म आपके लिए जो है आई डिड परफॉर्म दिस. उसके बाद अभी तो मैंने इमेज करा, फिर आई डिड परफॉर्म द सेम डिटेक्शन. अब कोड में कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ वो अब आप भी काम करिए, वीडियो डाउनलोड कर लीजिए रिलेटेड टू दिस पर्सन प्रभास. तो मैंने बाहुबली का एक कोड, मतलब कोड क्या, वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैंने डाउनलोड करा, मैंने सेम कोड चलाया. आई अप्लाइड द सेम कोड, बस सेम कोड चलाना है आपको. ओनली द थिंग इज, बस वो यहाँ पर इमेज लिया था ना आपने, प्रभास इमेज 3 JPG लिया था, बस उसके का वीडियो दे देना, सोर्स में दे देना. माई फाइल नेम वॉज bahubali.mp4, वीडियो फाइल दे दीजिएगा, उसको भी पूरा वो ट्रेस कर लेगा. ठीक है, एक एक को ट्रेस करेगा. ठीक है, पूरा ट्रेस करके आपको फाइनल जो वीडियो है वो दे देगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप, या उसको देख लीजिएगा. सो लेट मी शो यू द वीडियो ऑल्सो. ओके, वीडियो में आपको बता देता हूँ क्या मुझे मिला था. मैं डिटेक्ट में जा रहा हूँ, एंड जस्ट गोइंग टू EXP3. ओके, एंड दिस इज समथिंग व्हाट आई गॉट. ओके, सो यहाँ पर भी उसने डिटेक्शन परफॉर्म करा है. आपके लिए बेटर है कि आप नंबर ऑफ इमेजेस ज़्यादा लें. गॉट द पॉइंट. तो बस मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं. कोड आपके पास पूरा है, करना क्या है, दो फोल्डर बना लीजिए, क्रिएट टू फोल्डर्स, इमेज एंड द लेबल्स. इमेज के अंदर पूरी 200-300 इमेज डाउनलोड कर लेना, या 100 से शुरुआत करो, कोई इशू नहीं है, जस्ट 100 इमेज. लेबल इमेज का जो एप्लीकेशन है उससे सबको टैग करना, और उनको दूसरे फोल्डर लेबल में सेव कर देना. उसके बाद दो और फोल्डर बनाना. क्या क्या बनाओगे, ट्रेनिंग वाला, वैलिडेशन वाला. उसके अंदर दो और बनाना, इमेज और लेबल वाले दोनों. ठीक है, उनके अंदर इमेजेस को सेव करना, एक में इमेज और लेबल पूरी करना ट्रेनिंग में, और वैलिडेशन में इमेज और लेबल 20-20 कर देना. ठीक है, ये काम कर देना. उनको फिर ड्राइव पर अपलोड कर देना योलो फोल्डर के अंदर. बात समझ में आई. उसके बाद चेंजेस करने हैं. चेंजेस क्या करना है, क्योंकि मुझे कस्टम एनालिसिस करना था, तो कस्टम एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, योलो 7 में मैं गया. अच्छा, उनको अपलोड किस में करना है भैया, डेटा फोल्डर में. सॉरी यदि मुझसे मिस्टेक हो गई बोलने में, तो योलो 7 में डेटा फोल्डर के अंदर ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन फोल्डर्स को आपको अपलोड करना है. ठीक है, उसके बाद योलो 7 में आई गो टू
डेटा इटसेल्फ, डेटा में ही जो कोको वाई एम एल फाइल है उसको कस्टम फाइल बनाना है, उसकी कॉपी क्रिएट करनी है। इसकी कॉपी क्रिएट करके उसको नाम दे देना कस्टम अंडरस्कोर डेटा वाई एम एल, और उसको एडिट करना। उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर रहे हो ना, तो NC:1 करना, ठीक है। पाथ जो भी कुछ है वो सब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, वो सब देना है आपको जिसको भी डिटेक्ट करना है, ये मॉडिफाई करना। उसके बाद YOLO 7 में जाके, डिप्लॉय में जाके, नॉट डिप्लॉय, YOLO 7 में, ओके थिंक, YOLO 7 डिप्लॉय में जा, नॉट इन डिप्लॉय, आई गेस यू नीड टू गो विथ CFG में जाके, ट्रेनिंग में जाके, ये जो आपने YOLO 7X लिया था, ये मॉडल आपने इंस्टॉल करा है, इसकी भी कॉपी क्रिएट करके इसका भी कस्टम फाइल बनानी है, और यहां पर भी आपको NC:1 करना है, ठीक है। क्योंकि आप 1 क्लास पे काम कर रहे हो, तो 2 एडिट मारनी है फाइलों में, बस उनको सेव कर देना। जो मैंने आपको 2 कमांड लिखे हैं यहाँ पर, ये बस आपको एग्जीक्यूट करना है। एक ये वाला कमांड जो कमेंट में दिया मैंने, एक ये वाला कमांड जो कमेंट में दिया है। एक बार इमेज के साथ करिए, एक बार वीडियो के साथ करिए, ये आपका कस्टम वाला YOLO 7 डिटेक्शन खत्म हुआ, ठीक है। Okay, so let me stop presenting, get back to my YOLO Google file. Let me tab, and this is my file. Okay, so this is certainly a छोटी सी एफर्ट करी है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए YOLO कैसे क्या काम करता है। कई स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो गए, आई होप सभी सक्सेसफुल हों। ओके, और ये अच्छी बात है कि पावर जस्ट अभी आ गई है। ओके, तो अब मैं अटेंडेंस लूंगा, आप लोग। अच्छा, डू यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव? यस। हम्म। हाँ हाँ, करते हैं। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, क्लोन करा। हम्म। सी देखिए, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है शशिकांत, आप जो पूछ रहे हैं। द रीज़न इज, यू नो, ऐसा नहीं है कि इसकी पाइप अवेलेबल नहीं है। यदि आप अभी वो PYP पाइपी करके जो वेबसाइट है जिस पर ऑलरेडी ये सब अवेलेबल रहती हैं, जिसके पाइप वर्जन जो भी इंस्टॉल करने रहते हैं, आप अभी सर्च करोगे ना आपको मिल जाएगा, ठीक है। कि आपको PIP इंस्टॉल YOLO 5 करके, मैंने YOLO 5 को देखा है। एक्चुअली होता क्या है कि क्लोन क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं ना बेटा, तो मॉडिफिकेशंस जो हैं, मॉडिफिकेशंस आपको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी जाके आपका मॉडल सही तरीके से काम करेगा। यानी मैं PIP करके सिर्फ वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड फाइल्स को कर लूं और फिर उसके ऊपर मॉडल को ट्रेन करूं ना, गलत देगा, बिल्कुल गलत देगा, कई बार तो चलता भी नहीं है, ठीक है, वो चलता भी नहीं है। तो ये मैं आई डिड ट्राइड, बिकॉज आई मीन, मतलब मैं कई महीनों से लगा हूं इसके पीछे, सारी फाइलों के पीछे। तो क्या है कि आपके पास आपको मिल जाएगा, पाइप वर्जन नहीं मिल जाएगा, लेकिन क्लोन क्यों करना पड़ा? क्लोन इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्या होता है इसमें चेंजेस करते हैं फाइलों के अंदर, जो जिसकी वो गिट की जो है ना ऑफिशियल, वो क्या करेंगे, फाइलों में चेंजेस करेंगे, अपडेशंस करेंगे। अपडेशन करेंगे तो अपडेशन आपको तभी मिलेंगे जब आप क्लोन करके इसको करोगे। यदि आप क्लोन करके नहीं करोगे और बस ऐसी फाइल को पाइप पर इंस्टॉल कर करोगे, आपको बिल्कुल काम नहीं होगा, ठीक है। तब इसकी क्लोनिंग करी गई है। ओके, बिकॉज द वर्क इज स्टिल अंडर गोइंग प्रोसेस। तो आपने पूछा कि सर अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है योलो, तो फिर भी प्रीवियस से तो काफी कॉन्फिडेंट निकला ये, कि आपको काफी कुछ एक्यूरेसी यहाँ पर मिल गई है। YOLO 6 आया ही नहीं था कि उसके 1-2 हफ्ते के अंदर YOLO 7 रिलीज हो गया एज क्विकली, बस उसके बाद ही रिलीज हो गया YOLO 7, ठीक है। और YOLO 6 मैं आपको बताऊं, YOLO 6 अल्ट्रालिटिक्स का है। ये YOLO 7 जो है ना, ये अलग बंदे का है ये, ठीक है। आप गिटहब पे देखेंगे, ये किसी और का है। यहाँ पर वॉन्ग किंग, इन्होंने काम करा है इस पे, इनकी ये गिटहब के अंदर अवेलेबल है। तो यो अभी तक अल्ट्रालिटिक्स पर था योलो, अब ये इनका काम है, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ा, जैसे मैंने पढ़ा ही दिया आपको, एक्यूरेसी क्यों ज़्यादा है क्या नहीं है, दैट आई टॉट। तो इसका तो काफी बेनिफिट है। और जो भी चेंजेस होंगे, फिर क्या करना पड़ता है आपको, देर इज वन मोर कमांड, गिट कमांड चलाना पड़ती है, गिट अंडरस्कोर पुश पुल करना पड़ता है, तो जाके जो भी चेंजेस होते हैं ना, वो आप इंस्टॉल कर पाते हैं अपने सिस्टम पर। दूसरी बात, मेरा सजेशन है सभी से कि गूगल कोलैब पर ही ये कोड को करना। यदि आप अपने सिस्टम पे करोगे
कई बार रिक्वायरमेंट मैच नहीं खाएंगी, ठीक है, परेशान हो जाओगे। ठीक है, बेटर कि आप गूगल कोलैब पे चलाएं, यहाँ चीज़ें आपने देखा काफ़ी आसानी से हो गई हैं, और आपने रिजल्ट भी करे हैं अचीव। दिस इज माई सजेशन। दो लोकल होस्ट पर भी चला सकते हैं। ओके, अब यदि वेबकैम की बात करें, तो अर्शिया हैज डिड आस्क द क्वेश्चन कि सर मुझे जैसे लाइव ट्रैकिंग करना है और ये सारा, तो आई हैवंट डेमोस्ट्रेटेड दिस थिंग करंटली कि यदि मैं लाइव ट्रैकिंग करूं और ये सारी चीज़ें, दो मॉडल इसी तरीके से ट्रेन होगा, अपना सारा टास्क यही होगा। फिर लाइव ट्रैकिंग के लिए वी नीड टू चेक फर्दर कि अब उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके अर्शिया, राइट नाउ तो ऐसा है कि आई एम अवेलेबल विद वीडियो एंड आई कैन, या आई कैन डू द मेंशंस। यस यस, यू कैन मेंशन दिस थिंग इनटू योर रिज्यूमे। यस, सब कुछ कर सकते हो बिल्कुल। आप अपने देखिए मैंने तो इस पे काम करा, आप किसी और पे, अच्छा मैं बता भी दूं, आपको सजेशन दे रहा हूँ प्रोजेक्ट की, बहुत बढ़िया। क्रैक्स, टू फाइंड क्रैक्स ऑन द रोड, यदि आपके पास, टू फाइंड क्रैक्स इन द रेलवे ट्रैक, टू फाइंड क्रैक्स इन द वॉल, ठीक है, इन मशीन्स, हार्डवेयर, ठीक है, आप इस योलो को, आप यदि आपने डेटा सेट बना लिया ये क्रैक का, यदि रोड पे क्रैक, गड्ढे वड्ढे हैं, पानी, वाटर, क्लीन वाटर, डर्टी वाटर, हर जगह भैया एप्लीकेबल है ये। आपके बस इमेजेस ले लो, कनेक्ट कर लो आप इमेजेस, मतलब इमेज कलेक्ट कर लिया आपने, 100 इमेज भी कलेक्ट कर लिया आपने इन सब चीज़ों की, बस अपने मॉडल को लाकर ट्रेन कर दो, और बस आप अपना प्रोजेक्ट बता दो, देखिए हमने भाई ये प्रोजेक्ट बनाया था यो लोग का, और ये हमें रिजल्ट्स मिले। किसने पूछा था कमेंट में क्वेश्चन? हृदय। यस, यू कैन मेंशन दिस थिंग, बट दूसरे डेटा सेट के साथ काम करिएगा। ठीक है, ओके, लेट मी शो यू माई सेल्फ यार, अब राइट आ गया, मैं दिखूंगा तो सही यहाँ पर। ओके, हियर आई एम। सो क्या आप अपना कैमरा टर्न ऑन कर सकते हैं ताकि मैं अटेंडेंस ले सकूं? कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा सो आई कैन टेक द अटेंडेंस? ओके, अभी मैं स्क्रीन शेयर के साथ, फिर मैं बाद में स्क्रीन शेयर बंद कर दूंगा। इनिशियली विद द शेयर्ड स्क्रीन एंड देन आई विल लेटर। ओके ठीक है, कुछ लोगों ने टर्न ऑन करा कैमरा, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग।